वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी बीएचयू का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज ए कंप्लीट पैकेज कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है क्योंकि ये मेरा जूनियर भी है एनआईटी जमशेदपुर का। तो पवन, जो कि एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक कर रखा है, अभी प्रेजेंटली आईआईटी बीएचयू में मीन्स ईसी डिपार्टमेंट से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में है। साथ ही साथ इनका टीआई डिजिटल में ऑलरेडी इंटर्नशिप भी लगा था और वहाँ पे पीपीओ कन्वर्ट भी हो चुका है। तो और मैं एक चीज़ बता दूं कि पवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ऑथेंटिक एंड रियल इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ साझा करेंगे। तो पवन, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट स्कोर, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, फिर एकेडमिक स्ट्रेस, ओवरऑल कैंपस लाइफ, फी स्ट्रक्चर, फिर हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी, टाइप्स ऑफ कंपनी दैट विजिट फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट, फिर पैकेज कितना ऑफर करता है, लाइक हाईएस्ट पैकेज, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, और भी लाइक प्रोजेक्ट का एलोकेशन कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, और भी क्या क्या उनका वैल्यूएबल सजेशन, लाइक बेस्ड ऑन हिज 2 ईयर एक्सपीरियंस ही विल सजेस्ट हिज जूनियर्स दैट उनको ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर वो चीज़ें जूनियर फॉलो करेंगे तो उनका कॉलेज लाइफ एक बहुत ही बैलेंस और एक अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, ये आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके और लार्ज बनाए और इस तरह के इनिशिएटिव को बढ़ावा दे, ताकि मैं किसी भी गेस्ट को बहुत ही ईजिली वे से अप्रोच कर सकूं और भी मीन्स इस चैनल का एरिया और भी लार्ज कर सकूं और भी चीज़ें हम बहुत ही ईजिली वे में कवर अप कर सकें। तो चलिए, और भी अगर किसी दूसरे कॉलेज का आपको एमटेक कॉलेज रिव्यू देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉलेज का एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक दे रखा है। उस लिंक पे जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक देखें, इसमें हम सारा इन्फॉर्मेशन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पवन, लाइक सबसे पहले यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Okay, hi everyone, and I am Pawan Kumar, and I hail from Andhra Pradesh, West Godavari district, and I did my BTech from NIT Jamshedpur. As he said, like I'm his junior as well there. And after that, I gave my GATE in 2021. At that time, I haven't got a good rank, so I took 1 year preparation again, and I gave GATE again. And then currently, I am pursuing my masters in microelectronics in EC department from IIT BHU. As he said again, like I got an internship in TI as a digital intern, and there I converted that into PPO as well. So that's simply about me. अगर आप लोगों में से भी कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे अपने कॉलेज का तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, लाइक इसी डिपार्टमेंट में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और इसी में कौन कौन सा ब्रांचेस, सब ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, वो कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल? सो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में फॉर एमटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर एलिजिबल, बट गेट पेपर ईसीई में देना ज़रूरी है। बट आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आ सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से भी आ सकते हैं फ्रॉम योर बीटेक बैकग्राउंड, बट ये इंश्योर करना है कि आपका ईसी पेपर में आपका स्कोर है, वैलिड स्कोर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल टुडे इज देर आर 4 मेन स्पेशलाइजेशंस which are microelectronics, digital techniques and instrumentation, communication, followed by microwave. And one of the major things that we have noticed over the years is many people are not having a clear understanding about the branch named DTI, Digital Techniques and Instrumentation. So what they're choosing is they're preferring communication and microwave above digital techniques and instrumentation, which is actually quite wrong, because DTI is a very good branch
which is almost similar to microelectronics in terms of both curriculum and opportunities as well. So these are the four main branches, and if I want to prioritize the order when you are choosing, so the priority order will be microelectronics, followed by DTI, followed by communication, followed by microwave. This priority order is purely based on the MTech placement opportunities that you are going to get in the college. So apart from that, it lies on your interest, which specialization that you want to choose. And from next year onwards, from 2026, the department has recently announced that they are going to start another VLSI based specialization. So there are going to be 5 specializations in total from next year onwards, from 2026. So this is regarding this, how to get admission into this. And when you come to IIT BHU, first of all, there is an shortlist which is going to be based on your GATE scores initially, and they'll call you for an document verification process. And in the document verification process, there is not going to be any kind of interview going to happen. It is only purely document verification only, and based on the merit basis and the category wise, they are going to allot the seats, and the remaining candidates will be remain in the waitlist area. If someone is going to opt out a seat from the main selected list by choosing other colleges in the next subsequent rounds, then the candidates in the wait list will be offered the seat in the subsequent rounds. And there is a very big backlash also slightly regarding calling students for document verification before offering the seat itself, like calling 600 students, 700 students. But the main problem here we need to observe slightly is there are several students who will apply to these colleges even though their rank is 1, 2 or under 10 or under 100. Those are not going to stay with the seats. They are going to take admissions into like offers from PSUs, and they'll leave the college in the later stage, and this seat is going to remain vacant. So this provides a opportunity to the students who are having slightly lesser rank when compared to them, so that they will get an opportunity at least. And there are seats of around 52 seats across the 4 specializations, spanning around 13 from each specialization, like 13 from microelectronics, 13 from DTI, 13 from communication, and 13 from microwave. 1 or 2 seats might slightly vary. So these are total number of seats in a college. लाइक हर ईयर का गेट स्कोर वेरी करता है, गेट का यही तरीका है, बट गेट एडमिशन 3 साल के बेस्ड मतलब गेट स्कोर के बेस्ड पे होता है. तो जस्ट हम एक मीन्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक अगर कुछ मतलब कितना अप्रॉक्सीमेट स्कोर पे हम IIT BHU का इसी ब्रांच मतलब जो भी सब ब्रांच अवेलेबल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डेटा हो किसी ईयर का. सो यूजुअली हम 2 साल का डेटा है हमारे पास, एक 2022 का 2023 का. हम 2022 का देखेंगे एक बार. एक्चुअली रैंक्स के हिसाब से देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रैंक्स बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि कुछ सालों में कम स्कोर पे बहुत अच्छा रैंक मिलता है और कभी कभी कुछ बहुत अच्छा स्कोर में कम रैंक मिलता है. तो हम स्कोर के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि वही एज पर द कॉमन एनालिसिस देखेंगे. सो 2022 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी में 693 पे. दैट इज ऑल्सो इन फिफ्थ राउंड पे क्लोज हुआ. और OBC का गया 560 एंड EWS का स्कोर गया 612 एंड SC में 500 के आसपास आया. एंड STB अराउंड 450 तक आपका गेट स्कोर है, अराउंड 400 के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ए कॉल फ्रॉम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड DTA का बात आएगा तो एक्चुअली उस टाइम कुछ सिचुएशंस की वजह से जनरल कैटेगरी का DTA स्कोर काफ़ी अच्छा गया था, मतलब काफ़ी बड़ा गया था, मोर देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल. 701 पे क्लोज हुआ था DTA. दैट इज ऑल्सो इन 5th राउंड ओनली. एंड OBC में सबसे कम स्कोर था अराउंड 550 एंड EWS में उसी के पास है, अराउंड 596 और 600 के बीच में क्लोज हुआ था. एंड वो 5th राउंड और 7th 8th राउंड तक गया है स्पॉट राउंड्स में एक्चुअली. एंड SC कैटेगरी में तो 470 के गेट स्कोर के आसपास अराउंड 3500 गेट रैंक था 2022 वाला गेट पे. तो उस रैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और ST कैटेगरी में 300 गेट स्कोर तक गए, काफ़ी नीचे गए. तो अगर आपका स्कोर बहुत कम है देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं DTI. अगर 7th 8th राउंड में मिल जाता है, तो अगर मिल जाएगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है. और वैसे कम्युनिकेशन का बात आता है तो 621 जनरल कैटेगरी पे क्लोज हुआ है एंड 595 OBC में क्लोज हुआ है एंड 540 के अराउंड 600 अराउंड EWS में क्लोज हुआ है स्कोर.
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। 2022 का ही बात हो रहा है सारे। एंड फाइनली कमिंग टू द माइक्रोवेव ब्रांच, इसमें कोई SC/ST कैंडिडेट्स सीट लिया नहीं उस सील में। तो जनरल कैटेगरी में 540 तक गया। तो 2020 में उसका गेट रैंक था अराउंड 1400। तो 540 गेट स्कोर था। एंड OBC कैटेगरी में 509 तक गया गेट स्कोर, उसका रैंक अराउंड 2000 था। सो अगर आपका रैंक अराउंड 2300 के आसपास है, अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाना है नहीं जाना है, तो आप आने पे शायद आपको माइक्रोवेव एटलीस्ट मिल सकता है IIT BHU में। सो दिस इज 2022 का डेटा है। अगर 2023 का डेटा की बात करें तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल कैटेगरी गया 650 गेट स्कोर तक गया है। और उसी साल का शायद उसका रैंक था 650 है, रैंक भी उसके आसपास ही है। और OBC कैटेगरी गया 570 तक। 570 एक्चुअली इस बार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल राउंड्स पे भी गया है। स्पेशल राउंड 1, 2, 3 वाले पे कुछ 3 पे क्लोज हुआ है 570 पे OBC कैटेगरी में। और ये 2023 का डेटा है सारी, अभी जो इन्फॉर्मेशन फिर से बता रहा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का। जनरल कैटेगरी 650 गेट स्कोर पे, OBC 570 गेट स्कोर पे, EW 646 गेट स्कोर पे क्लोज हुआ है। और SC कैटेगरी अराउंड 500 पे क्लोज हुआ था। और ST कैटेगरी अराउंड 450 के आसपास क्लोज हुआ था। सो वैसे इन्फॉर्मेशन आता है DTA का 550 तक गया, बहुत डिप हुआ था DTA पे स्कोर। और 10th राउंड तक गया DTA में इस बार, लास्ट टाइम मतलब 2023 में। और OBC में 540 तक गया है। और EWS में 525 तक गया है स्कोर। और SST कैटेगरी में अराउंड 430 तक आप एक्सपेक्ट कर सकता है एक कॉल आने का DTA में। लेकिन आपको 8th या 9th या 10th राउंड तक वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड्स में। एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो अराउंड जनरल कैटेगरी में 550 तक गेट स्कोर गया है लास्ट ईयर। आप देख सकता है कि DTA और कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट नेक टू नेक था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोगों का जानकारी नहीं है कि DTA का एक कोर्स है तो वो बाकी कोर्सेज से भी थोड़ा अच्छा है। सो वो भी थोड़ा मिसमैच था। मीन्स DTI पता नहीं चल पा रहा है, बट अच्छा ब्रांच है DTA के बारे में किसको पता नहीं चलता है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने के बाद आपको पता चलता है कि DTA अच्छा ब्रांच है। तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है आजकल जो स्टूडेंट्स फिल कर रहा है फॉर्म। एंड अराउंड EWS तो 650 तक गया कम्युनिकेशन में। तो आप इजीली देख सकता है कि 650 वाला कम्युनिकेशन वाले को DTA भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। और शायद माइक्रोटेक भी मिल सकता है, लेकिन DTA तो जरूर मिल जाता है। तो लेकिन उसको उतना आइडिया नहीं, तो उसको उसकी वजह से आपको उसको कम्युनिकेशन पे एडजस्ट करना पड़ा। सो ये इन्फॉर्मेशन DTI को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए कम्युनिकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट VLA से रिलेटेड डोमेन पे जाना है तो आपको DTA को ज़्यादा प्रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव के ऊपर। क्योंकि DTA का जो भी कोर्स वर्क है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स वर्क से काफ़ी रिलेवेंट है। और DTA का जो लैब्स होता है, एक लैब होता है सेंसर इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग यूजिंग आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई इसके द्वारा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया लग जाता है आपको। और सेकंड सेम में आपको FPGA इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लैब होता है। तो काफ़ी थोड़ा रिलेवेंट है VLSA फील्ड से when compared to communication or microwave. If you are going into VLSA domain, then choosing DTA over communication microwave is a very good shot. So that is regarding all the about gate scores. कुछ लोग बाकी IITs में SPCOM लेना, इसको लेना पसंद करता है when compared to communication microwave लेना in IIT BHU. So वहाँ पे आपको थोड़ा असर पड़ जाता है कि what you are going to prefer when compared to this college and this college. So choosing communication microwave in IIT BHU is a good shot as well, because workload इसके regarding इतना ज़्यादा नहीं होता है, so you can focus on VLSA subjects and prepare for VLSA profiles as well. Like most of the student का main purpose internship and placement होता है. Yeah. Few of students have also means interest in the higher areas like PhD or something else. तो अगर हम internship की बात करें तो इसी में कितना मतलब किस टाइप का internship रोल प्रोवाइड होता है, लाइक कॉलेज अलाउ करती है या नहीं करती है, किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप हो जाता है, लाइक एक इंक्लूसिव कंप्लीट डिटेल ऑफ इंटर्नशिप, लाइक इसी का क्या क्या ऑफर अवेलेबल है उनके। The department allows for the duration of maximum 6 months for internship, and once the student gets an internship in a particular company, it is mandatory that the student also needs to take a permission from his corresponding supervisor as well for the same internship that he is going to get.
Like he needs to get two permissions. One is permission from the department, and another one is permission from the corresponding supervisor that he is going to be assigned. In the first semester, if the supervisor is not assigned to the candidate yet, there will be one TPO in charge or placement in charge who is going to sign on behalf of the faculty advisor. But before going to the internship, it is mandatory that you are taking a permission from your corresponding supervisor before going and joining the intern. तो mainly summer internships के लिए companies आते हैं वो Texas Instruments, Qualcomm and Intel and एक अच्छा स्टार्टअप है HQ नाम पे, तो वो भी है. ये चार कंपनी यूजुअली समर टर्म्स के लिए आ जाता है. ये कोर हो गया. या फॉर कोर. सो टिपिकली फॉर कोर ये चारों कंपनी है जो इंटर्नशिप के लिए आता है इन कोर इंटर्नशिप्स. AMD also. No, yeah, but those are come for 6 months internships. Okay. For 6 months internships, there are companies like Analog Devices, ST Microelectronics, Marvell, ARM, Qualcomm visited us again for 6 months internships. Steradian visited us, AMD and Olo. These are the companies that visited for 6 months internships in core. And apart from that, there are other companies from coding areas as well, like Microsoft and काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो 2 महीने वाला इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं. बट यूजुअली द कल्चर इन एमटेक EC इज मोस्टली टुवर्ड्स कोर ओनली बिकॉज देर आर काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है कोर में. तो इसीलिए मोस्टली बच्चे उस साइड जाना नहीं चाहता है जहाँ पे कोडिंग का रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह फील्ड्स में वो जाना नहीं चाहते मोस्टली बिकॉज there are subsequent number of opportunities available already in EC department for the core opportunities. Okay. And for when it comes to stats, internship में TA में from MTech EC one student has gone, in Qualcomm 1, and in Intel we have 1, and Analog Devices we have 2, in ST Microelectronics we have 4, in Marvell we have 1, and ARM we have 1, Steradian also we got 1 student, and in AMD we got 1 student, and Olo we got 1 student. These are the stats. But actually, out of these students that I stated, some student has left for PSUs after completion of around 2 to 3 months of coursework. So this is simply regarding how the internships are going to be offered. And regarding the PhD opportunities that the students who are also looking for as well, I think I'll share that as well. Yeah. So there is a DAD scholarship I think that is available for IIT students, and जो लोग इंटरेस्टेड है तो PhD में जाने के लिए for abroad and all those things, and वो काफ़ी अच्छा opportunity है, and you'll get good referrals from our college as well if you want to go and study PhD in abroad colleges and all those things. So yeah, you get PhD opportunities as well. So this is regarding both internships and PhD opportunities in our college. And the internship stipend, if I want to speak of that as well, the minimum the minimum stipend is offered by one of the companies, that is 20,000, that is the least, and the next least is 40,000, and the highest is 60,000 in core, and in software it is around 1.2 lakhs to 1.3 lakhs, and yeah, that is regarding the internships altogether. Okay. सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल रहती है. अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मतलब उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि इसी ब्रांच के बच्चे जनरली हर सॉफ्टवेयर कंपनी में एलिजिबल होते हैं. लाइक सिस्को हो गया, फिर जितनी भी सॉफ्टवेयर आप एज्यूम कर सकते हैं सारी कंपनी लगभग आती है. मीन्स कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप से PPO में कन्वर्जन हो गया था? So we'll take this the number of candidates that are available by the time of internships and the placement season. Only 18 students were available that who were sitting for the placements. Okay. And out of these 18 students, 10 students have gone for internships. Okay. All students, one student has went for a summer internship, and the remaining students all did their 6 months internships. So that is around 65%. I guess. PPO conversion rate. PPO conversion rate is also, yes. Out of these 10 students who went, 5 students got PPO, and STM sadly didn't offer PPO to any of the candidates. And STM took 4 candidates actually. So that is the major chunk actually. That the number of students there. And one PPO is offered by Volvo, and one PPO is offered by TI, Qualcomm, Marvell and ARM. These are the companies that offered PPO to us. And STM has not offered. Yeah.
पवन के एफर्ट को डेफिनेटली अप्रिसिएट करना चाहिए कि इसने सारा डेटा तैयार करके लाया है, बहुत ही ऑथेंटिक जेन्यून। तो मीन्स डेफिनेटली वी शुड अप्रिसिएट पवन एफर्ट। अब हम आते हैं प्लेसमेंट पे। लाइक प्लेसमेंट में किस टाइप का रोल ऑफर हुआ था, किस टाइप की कंपनी विजिट की थी, इसी ब्रांच के बच्चे किस किस टाइप, मतलब कौन से प्रोफाइल में एलिजिबल थे, और कुछ टॉप कंपनी के नाम, फिर कितने परसेंटेज बच्चे का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है अभी तक के डेटा के हिसाब से। तो लाइक इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में। So okay, MTech EC में at the end by the time of placements 18 registered students है, those who are sitting for placements। उसमें 4 बंदे के पास already PPO है in companies like TI, Qualcomm, Marvell and ARM that I have already mentioned, and the remaining 14 students were there who are sitting for placements, and the competition will be coming from BTech EC students and electrical students as well from MTech, and the roles that are going to be offered is in both core and coding as well. But mostly MTech EC students again prefer core. No one has actually preferred coding from our branch. If you're interested in coding as well, then there are opportunities in that as well. In Microsoft and Qualcomm software came on day one, and काफ़ी अच्छे companies है जो first day one पे आया है, and they are available for EC as well if you are really interested in coding. And when coming to core specifically, the roles that are offered basically are analog roles, like analog engineer roles and digital engineer roles. So analog ecosystem is not that up to the mark because the number of students interested in analog profiles are very low in IIT BHU basically. So mostly the ecosystem that is developed in here in core is mostly towards the digital domain, because the number of opportunities are more in digital domain when compared to analog domain. So to be on the safer side and all those, for various reasons, people mostly go towards digital domain. And to divide the entire domain into 2 specific things, analog domain and digital domain. And for analog profile, the companies that visited our college for 2022 batch are one is Qualcomm, one is TI, and another is Analog Devices, and another is Samsung Semiconductor India Research. And these are the analog companies that visited us. And for the digital roles, the companies that visited are TI, Qualcomm, Intel, Micron, and Ola. Ola Silicon came actually to our college, but took no one. So these are the companies that visited us on day one. And apart from these companies, the other companies that visited us in the core domain are one is CDOT and HQ, Singularity Dynamics, Signal Chip, and Reliance Energies, Hero Motors, and BERT Labs. These are some of the other companies that visited us in core for MTech ECE. And when coming to the stats, in TA we got 1 offer in analog profile and 1 offer in digital, 2 offers from TA analog profile, but 1 student chose Intel as well. He left that opportunity from TA analog. And in Qualcomm we got 3 offers, and in Intel we got 3. In Micron we got 2, which is an internship plus PPO opportunity. Since the department allows for a maximum duration of 6 months internships, if you have not done internship in the 3rd semester, so there is one important thing I would like to mention actually. The internships in BHU are usually allowed in the 3rd semester. So that in case if you are not having a PPO in your hand by the end of your 3rd semester, you can come back and sit for the placements again in your December placement season. So this is like having a second opportunity again if you haven't not converted your internship to a PPO. It is one more good thing that is happening here. And the difficult part on the contrary is it is highly difficult to convince companies to come for 3rd semester internships. The very reason being the company don't want to lose the candidate for the 6 months duration of the period in between if they offer a PPO, because the student might go to other company or there might be other reasons. So that is the reason why they might not want to lose on the candidates. That is why very few companies visit for 6 months internships in 3rd semester. In case if there is an opportunity like an internship plus PPO, like offered by Micron, if the student has not done an internship in the 3rd semester, then they are ready to go for the internship plus PPO opportunities. And we got an offer from Reliance Energies, one from Hero Motors. Hero Motors actually came for both electrical and electronics. It is a combination profile in embedded systems, something of that sort. And there is one more opportunity from BERT Labs as well.
So these are the companies actually. इट्स लाइक मीन्स हम लोग अभी मीन्स नॉर्मल डेटा की बात करें, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी आई थी, मतलब कुछ टॉप कंपनी के नाम हमने बताया है। एक चीज़ मैं बताऊं, लाइक बहुत सारे कंपनी में क्या होता है ना कि इंटर्नशिप 6 महीना होने के बाद वो प्लेसमेंट में अलाउ नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे IIT का जानता हूँ, तो यहाँ की ये अच्छी बात है कि आप इंटर्नशिप में अगर आपका PPU कन्वर्ट नहीं हुआ, आप आके दिसंबर से प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Okay. अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करें तो कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो चुका है? तो 16 out of 18 got placed, so it is almost equal to 90% हम मान सकते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ कि EC का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ के हिसाब से, और आपने अगर 2 साल मेहनत किया होता तो एक क्वालिटी प्लेसमेंट। EC में क्वालिटी कंपनी भी आई है, जितनी भी कंपनी आई है सब क्वालिटी वाली कंपनी आई है। डे 1 पे हमारा एक्चुअली जो मतलब हमारे पास कितने ऑफर्स है, अराउंड 14 स्टूडेंट्स बैठे थे प्लेसमेंट्स के लिए, रिमूविंग द 4 PPO कैंडिडेट्स। उन 14 में 10 ऑफर हमको डे 1 में आ चुका है। सो डे 1 में मतलब 10 पीपल आर ऑलरेडी प्लेस्ड, बाकी 4 लोगों को रिलायंस में, बेट लैब्स में, बाद में ऐसा हुआ, लेकिन मेन ऑफर्स वी ऑफर्ड ऑन द डे 1 इटसेल्फ। क्वालिटी कंपनी और क्वालिटी पैकेज, क्वालिटी कंपनी क्वालिटी EC का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मेरे हिसाब से हुआ था। और अगर आप 2 साल तैयारी करेंगे तो आप श्योर, मतलब इस साल के डेटा के हिसाब से, और आने वाले टाइम में भी अभी सेमीकंडक्टर का ही टाइम रहेगा, मिनिमम 10 ईयर्स। अगर हम पैकेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज लाइक मैक्सिमम कितना गया है, एवरेज कितना गया है, मिनिमम कितना गया है, मीन्स ऑन एन एवरेज विदाउट नेमिंग द कंपनी? एवरेज पैकेज इज 29 lakhs, like the average of all the students. The average package is 29 lakhs, and median is 29, I guess 29 lakhs। मतलब जो काफी लोगों को जो पैकेज मिला है वो अराउंड 27 and 30 lakhs के बीच में है, एंड सबसे लीस्ट पैकेज है was 12 lakhs that was offered। highest was 39.24, ओके, 39.5। एक चीज़ लाइक EC का मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब मैं जानना भी चाहूँगा, मेरे हिसाब से गैप का थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ता है, बट तुमने देखा है लाइक पूरा सिस्टम को, तो गैप का क्या इम्पैक्ट होता है प्लेसमेंट में, EC के प्लेसमेंट? लाइक सो मैंने भी पहले इसके बारे में बहुत सोचता था, अगर किसी का बहुत गैप है तो देन इट इज गोइंग टू बी हाईली डिफिकल्ट टू गेट अ प्लेसमेंट, बट हमारा बैच में ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारा बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स है जिसका गैप अराउंड 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, और कुछ स्टूडेंट्स का गैप अराउंड 8 साल के, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स का भी प्रॉपर गैप है। ऐसे भी नहीं कि that they have worked somewhere and came here and all, there is a proper gap that was involved, but if you work really hard in the 2 years that were coming here and you really put good efforts, then placement is going to be far sure that is going to happen. So gap doesn't matter much. This is what I have truly observed. Like if you are a candidate who is having keen interest and you are putting your 100% efforts, gap has not bothered any candidate in our batch, especially from MTech ECE. लाइक EC में 4 सब ब्रांचेज हैं, तो ये जितने भी कंपनी थे उसमें सारे चारों ब्रांच एलिजिबल हो रहे थे, या किसी को प्रायोरिटी मिल रही थी, किसी को कम मिल रही थी, ऐसा कुछ? या आपको प्रायोरिटी ब्रांच वाइज यूजुअली नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम सारे ब्रांचेस को साथ में लेके जाएंगे एज EC। हाँ, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्ट्रेंथ कम है, तो हम यहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहता है कि माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में इतना बच्चा है, DTI में इतना बच्चा है, कम्युनिकेशन इतना बच्चा है, सो हम एक साथ में लेके जाना चाहता है एज एन MTech ECE। बट कभी कभी 1 या 2 कंपनीज हो सकता है, दोज आर वेरी स्पेसिफिक, हमको माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चे ही चाहिए, लाइक हमको ये बच्चे ही चाहिए, मतलब इफ दे आर कंपनीज वेरी पर्टिकुलर देन वी कांट डू एनीथिंग मच। बट ऐसे कंपनीज हमको हमारा पूरा बैच में एक ही कंपनी मिला है, इसके अलावा बाकी कंपनीज इज अलाउड फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच, बट द मेन थिंग that is going to be taken into consideration is your CGPA. So you have to maintain at least a CGPA of 7.5 to be considered for the further placement procedure. And it also means the lower CGPA, you are going to have a lesser impression on yourself when you are going to sit in an interview. Your CGPA is going to be highly matter in your MTech if you are sitting for a placements, because you are doing masters, which means it is showing like you are already interested in masters. That is why you are doing masters. If you are already interested in a particular area, then you should be scoring high in that area. Then there is no compromise on that particular part. So make sure you are having a very good CGPA. So there is no higher bar like 8 आना है, 8.5 आना है, ऐसा नहीं है। तो
9 आ रहा है तो 9 लेके आओ, 9.5 लेके आओ, जितना आ सकते हो उतना लेके आओ। लाइक कोर और सॉफ्टवेयर के पैकेज में पहले बहुत डिफरेंस होता है दूसरे ब्रांच में, बट इसी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मुझे लग रहा है कि इवन पैकेज इज सिमिलर टू सॉफ्टवेयर, इवन मोर देन सम सॉफ्टवेयर। Yes. So yeah, that's what I'm saying. Like 39.5 lakhs offered by one of the companies is almost, I think, equivalent to काफी अच्छा package है when compared to software as well. And the other package is also like 36 one company is offering, and 33 is one company is offering, and 28 is offering by some company. And काफी अच्छा packages है, ऐसा नहीं है कि you're going core means you're going for some 10 lakhs package and you have to grow slowly one year after the other. That is not the situation now. काफ़ी अच्छा पैकेजेस मिल रहा है, and CTC is also very good and very competitive when compared to the software industry as well. So I think you can give a good shot in, which is the reason why MTech PC students are not bothering to go for software placements, because the packages are really good and it is a very quite good packages and all. That is the reason why they are staying with MTech PC. डेफिनेटली ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कोर के साथ मुझे आगे बढ़ने को मौका मिल रहा है मेरा इंटरेस्ट एरिया के साथ। I think Akhil is also really interested in our domain only. Definitely. And if you are really interested in electrical domain, you can go for electrical profiles as well, because electrical profiles are also open for EC people also. In the same way, EC profiles are open for electrical people also, because they can also come and give the interviews in most of the companies. But if you want to come to IDBHO, I'm reiterating the point again, you should have a valid GATE score in EC paper and maintain your CGPA as high as possible, so that you will have a better edge over the other candidates in your interviews that are going to happen. Like बहुत कुछ कंपनी में रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्ट हो जाता है, बहुत कम है. Mostly companies will have an examination pattern that is going to be there. Like examinations are going to be held in early November or the late October kind of period. After that, they are going to give the shortlist, and the interviews are going to happen in the December first week, like how it is open in all the other top IITs. But the point here is, you will get an edge in the interview as per your CGPA basis. Like there are two candidates. One candidate is having an CGPA of around 8.8, 8.9. Another candidate is having a CGPA of around 7.2, 7.3. So basically, the interviewer mind is already tuned like कि इसका pointer अच्छा है, तो ये अच्छा बच्चा हो सकता है mostly. तो थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ इंटरव्यू आगे चलता है. सो दैट इज द ओनली मेन रीजन. It might not be true like the candidate with the 7.2 pointer might not get the job. It depends on your skills again, but as a first impression making, your CGPA is going to be really matter. अब हम आते हैं एकेडमिक एरिया के बारे में. लाइक अगर EC की एकेडमिक की बात करें तो IIT BHU का एकेडमिक EC एकेडमिक कैसा है, फिर क्लास के लेक्चर, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी कैसी होती है, फिर मीन्स अटेंडेंस का क्या सिनारियो होता है, कितना परसेंटेज अटेंडेंस ज़रूरी होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, लैब की क्या फैसिलिटी है, मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, प्रोफेसर का सपोर्ट किस टाइप का होता है, लाइक इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ. सो बेसिकली द अटेंडेंस इन mandatory 75% attendance is mandatory for all the subjects that are going to happen. कभी कभी एक दो प्रोफेसर थोड़ा लूज हो सकता है on attendance basis for around 5 to 6% if something of that shortage is there. But you should be maintaining at least 75% of attendance, and you should be choosing at least 2 subjects from your core domain. Like if you're from microelectronics, you should choose 2 core microelectronics subjects. If you're from microwave, you should choose at least 2 core microwave subjects. Remaining 3 are electives. You can choose from your own specialization, or you can choose from other specializations as per the availability of that particular specialization. And in first sem, you're going to have 6 subjects and 1 lab. And in second sem, you're going to have 5 subjects and 1 lab. So when coming to the workload, each subject is going to have 3 lectures of 1 hour each per week, and the lab is going to have 3 hours. So I should say like the workload is very minimal, like not minimal, I can say it's very easily to manage. It is not that not very highly hectic and all. It is a very simple schedule. You can easily do the things that are going to be happening, and you can easily prepare for other exams like the core domain exams and all as well. Like GATE exam. Yeah, like GATE exam you can prepare, and mostly I think for MTech EC students that is not needed. You can get easily placement here unless you are very much interested in going for a PSU or all. You can easily get a job here if you really. But time is available if someone is willing to prepare. Yes. And coming to the how much relevant the subjects are for the placement scenario. Yeah. Like
I can name some subjects like digital IC design, microprocessor architecture, Verilog, and digital logic design. These are some of the subjects that are relevant for your core placements. But again, on the contrary side, the subject that is being taught in the class is never going to be enough if you want to prepare really for your core placements. Just make sure that you are going very deep into these subjects so that you are having enough knowledge, because if some company is offering you around 30 lakhs or 35 lakhs, they are definitely expecting something from you on a very high level. Just maintaining CGPA or getting scores in these kind of subjects is not going to say that you are going to have enough knowledge in these subjects. You have to go deep into these subjects to get to the core and have the basic understanding on each and every concept. So that is how it is going to happen. And lecture quality, professor support in professors lab are, availability, lab equipment availability. And for microelectronics, the labs that are going to be available are, first year they are going to work on centers TCAD, or one is going to be device fabrication kind of lab. You are going to fabricate the device in the using the software tools and all. And the second SEM is all about NG-Spice or open source tools, where you can assemble these small circuits and build circuits just like LT-Spice if someone is having some idea. This is how the microelectronics labs are going to be. And in DTI, first SEM it is going to be a sensors lab, and second SEM it is going to be a lab on FPGA based architecture and FPGA based designs, which is quite relevant to the core placements and profiles. And communications have their communication lab, and microwave has their microwave lab. And infrastructure availability is quite good, and I think strength कम है लोगों का, मतलब the number of students are less, so the licenses that are available for these softwares is also very adequate and sufficient for the people that are already there. And again, I'm saying don't expect very much that you're going to get a very keen and good knowledge in all the aspects that are going to be there. But what I can assure about IIT BHU is you can easily manage your workload, academic workload, and parallelly working on other things that are going to be useful in your core placements. Or if you want to have other kind of pursuits in your life, that you can do also parallelly along with the academic workload. It is not that hectic. Like one thing I have been noticed in the placement during my placement time, placement play a key role in the EC placement, whether it's be EC placement or electrical placement. So like how to choose the project, what should be our project topic, and like what are the important projects that we can expect in our placement interview, and what are the extra sub project, because definitely in some resume, like some of the company I should not mention their name, but definitely they expect some kind of VLSI project, Verilog based project. तो वो सब like कैसे cover up करना चाहिए? So basically how this is going to work is, if you are preparing your resume for a core company, you should keep your resume very specific and relevant to that company. And you should be in a position to answer each and everything that is going to be coming from your resume. If you mention something in your resume, then you should be knowing about it. There is no short other than that. And coming to the projects, when it comes to the digital projects, you can choose projects like processor designing, like 8-bit microprocessor design or 8-bit MIPS architecture design. These are the quite starting level projects. So if you start building on these, you can go to the next level subsequently. And you can also choose projects on FIFOs, like first in, first outs. And you can also choose projects on APB, AHB protocols, like communication protocols. You can choose projects on that. But this, you should be knowing one thing, like you should be very keen in your project. It is not like you know about a particular project and you saw that project somewhere in the YouTube and you just named the project. Okay, I did this particular project on architecture design, 8-bit MIPS architecture design that I have done. Then you are going to get questions on that. Then they'll ask like, why you did only 8-bit processor? Why you did only 8-bit processor? Why haven't you gone for 16-bit processor? Why haven't you gone for 4-bit processor? Then he will ask you how many clock cycles are going to take for this particular operation. What is the complexity level? Is there pipelining involved? Like, you are going to get a load of questions one after the other once you mention your project. So you should be very keen about picking your problem statement. Okay, let us suppose if you picked a project, let us say state the same example, like an 8-bit processor. Then you should be knowing like, okay, this is the processor I am doing.
what is the complexity of this project, is there pipelining involved, Okay. and is there any branching instructions are going to be there, what is the RTL code, and you have to implement everything on your own rather than studying it somewhere and just keeping it on the resume for the sake of the project. So that is going to be seen by the companies. The companies will surely have an edge for the candidates who are having very good projects on the resume. They're going to see that for sure. That is pretty sure that they're going to see those projects. And if you impress them with your projects and the explanation that you're going to give for the questions they are going to ask, then you'll be in a very good place that for getting a offer from that particular company. लाइक अगर कुछ कंपनी को छोड़ दे, एक आध कंपनी, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी का मीन शुरुआत ही प्रोजेक्ट से होता है या प्रोजेक्ट project is going to be, because see, the main agenda is the work that we are going to do after entering the company is going to be highly different from what we are studying. Like we are studying basics, like digital क्या होता है, मतलब digital IC design basics पढ़ रहा है, and Verilog थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो but हम कंपनी जाने के बाद वो एग्जैक्ट काम हम नहीं करते हैं. Okay. So the kind of work that you are going to do after entering the company is highly different. So you are showing your resume and telling them like, okay, this is something I know, this is the project that I have done, you can ask me questions on this. So then they'll try to pick that project, and if the project is very relevant to the company, like let us suppose say if you are saying like I worked on communication protocols like AHB and APP, which is being used in the company. So the candidate who is interviewing you is already knowing, having information about what that protocol is, and he has already worked some years on that particular communication protocols or process, whatever it might be. So he will be definitely asking very good questions on you on that particular thing. So if you are having relevant projects, they are going to ask you those questions for sure. If you keep some different projects like I did an robotic arm, something of that sort, maybe they might not ask questions on that. If it is something relevant to the particular role, the particular company, then they're definitely going to ask you questions on that, and it is going to play a very important role. And the main protocol of the interviews basically is they are going to ask you on your projects what you have done. Otherwise कुछ companies का कुछ specific questions throw होता है, मतलब they are going to ask this 10 or 20 set of questions, and they'll see which question which candidate is answering the questions very perfectly and very good manner, and they are going to give that offer to the particular candidate. Otherwise then they are going to go for this projects only, like what projects you have done. अगर हम CGPA की बात करें तो लाइक कितना CGPA तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है यहाँ पे? See, IIT BHU MTech, I think if you are maintaining CGPA less than 8, then you're not studying in. You're not at all studying. You are not putting any. You're not putting any effort. Without putting any effort, only you can get 8 CGPA for sure. Definitely. And maintaining an 8.5 healthy CGPA is very easy. 8 to 8.5 is very easy in MTech ECE if you study at least a week before of your exams. लाइक अगर हम हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी की बात करें तो IIT BHU में किस टाइप की मीन्स हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इफ समवन इज विलिंग टू परस्यू देयर हायर स्टडीज, और लाइक किसी प्रोफेसर का टाई अप कहीं बाहर से या कॉलेज का टाई अप, जैसा कि स्टार्टिंग में मेंशन किया डोसा वाला, तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल हो पाती है? Like that I have mentioned already, in the DAD scholarship is one of the scholarships where there is a student exchange program. Like you can go to foreign universities in, I think, in Germany and some other countries to pursue your higher studies. The college can directly refer you to that particular college, because the number of students who will be applying for PhD opportunities abroad is going to be very low in IIT BHU, because mostly people will go for placements, or they'll give GTech and go for PhDs only. So काफ़ी अच्छा opportunities है, and there are some professors already who did their PhD from countries abroad, and they are having good relations there. If you are really interested in pursuing a career in that, you can directly meet them, and they can arrange an interview or virtual meeting with the particular professors in that college, and they can make arrangements for you as well. That is one more thing that can happen. And even यहाँ भी कर सकते हैं. Yeah, you can pursue for, if suppose you are doing a very good project, and if you are very keen and interested, and your professor is very happy about the results that you are going to get, and very happy about the efforts that you are putting in your project, then he can extend you directly for the PhD as well. And also, if you want to, I think if there is a possibility, then you can get the PMRF as well. लाइक अगर हम ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस कैसा है, हॉस्टल एंड मेस की क्या फैसिलिटी है, और थोड़ा थोड़ा ना
साउथ इंडियन होने के कारण उस पर्सपेक्टिव से भी कि साउथ इंडियन के लिए कैसा है खाने की मेस की, तो थोड़ा थोड़ा उस एंगल पे भी टच करते हुए ओवरऑल कवर अप. Okay, coming from South India and especially from Andhra, and I am very rice eating person, so not a roti person. Okay. So basically that was the main fear in me before coming to this college. And one good thing is there is a South mess dedicated separately for the South Indian candidates, जहाँ पे रोटी और राइस दोनों बनते हैं और साथ में करीज भी बनते हैं जो हमारा साइड का फ्लेवर पे आते हैं थोड़ा सा. So I think for food that is already sorted there. We have a South Indian mess specially for us. And apart from that, coming to hostel, I think hostel में थोड़ा adjust होना पड़ता है हमारे कॉलेज में, because I think currently there is only 3 sharing bases for first year students. So but काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है अगर साथ में रहने पे. मेरे को इतना दिक्कत नहीं लगा, मतलब 3 लोगों को साथ में रहने में मेरे को इतना दिक्कत नहीं लगा. अगर आप अच्छा एक एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए और मज़ा करने के लिए, तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड. एंड कमिंग टू द कैंपस, आई थिंक कैंपस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा कैंपस भी है एंड ओपन कैंपस भी है. सो यू कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द नाइट. That is not going to be a problem, and you can enter the hostel at any point of time, and there are canteens available till 3 a.m. in the morning if you are a night person. So that is also not going to be a problem anyway. So I think as a whole package, IIT-BHU is going to be a very good experience. And if you are having a rank of around 800 to 900 or 1000 in GATE EC paper, and if you are struggling at that particular point whether to go for an communication in top IITs or choose microelectronics in IIT-BHU, I think I would have chosen IIT-BHU microelectronics over those, just because of the key point that I am interested in microelectronics and I want to pursue a job in VLSI. And don't forget, DTA is another important branch. This year also we got so many students. Those who don't know about DTA, they thought digital techniques and instrumentation is some instrumentation branch and kept communication and microwave more prior when compared to DTI. After coming here, they came to know about it and they started asking the professors like if there is a possibility to change the order. So once that is done, there is no going back. So it is going to be the final thing. So make sure you're going to give your order preference correctly. And from 2026, there is going to be another specialization in VLSI specifically coming to IIT-BHU. So there are going to be 3 branches that are relevant to VLSI in the next year onwards, I guess. One is microelectronics, DTI, and VLSI design that is going to come in the next subsequent rounds. And there is no bias on any specialization when it comes to companies. All the branches and specializations are treated equally when it comes to opportunities. And if you want to go specialization wise, the students who are left one is from microelectronics and one is from DTI. लाइक कम्युनिकेशन में 2 बच्चे 2 लोग प्लेस हो गया, माइक्रोवेव में 2 बच्चे 2 बच्चे प्लेस हो गया. जो रह गया वो दोज आर फ्रॉम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड DTA. सो इट डजंट मैटर लाइक विच स्पेशलाइजेशन यू आर. सो इट्स गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. एक क्वेश्चन लाइक BTech EC, MTech EC, लाइक प्लेसमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी में डिफरेंसेस आता है मतलब कंपनी वाइज, या फिर हम हर ब्रांच कंपनी में एलिजिबल होते हैं? No, if you are from BTech ECE or BTech EEE and you are currently pursuing MTech ECE, it is not going to matter. So the simple reason is basically जो companies electronics के लिए open होता है वो electrical के लिए भी open होता है. मतलब जो core companies है which are opening their positions for electronics background, they will open it for electrical background also. So if you did your BTech from ECE or no, I am comparing between IIT BTech or IIT MTech. I think there are companies, some companies will think like they need much new blood and all, so they might prefer BTech, and there are companies which prefer MTech over BTech. Okay, definitely there are depending upon the loyalty factors and all those things. And even offer more package. Yeah, offer more package. That is there anyway. All the companies that are offering BTech ECE candidates, they are going to offer slightly higher end only for the MTech ECE students or MTech students especially. लाइक अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.5 लाख तक मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे कम में ही आपका 2 साल कवर अप हो जाएगा. एंड 12,400 अभी तक के हिसाब से आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है. yes. अब हम आते हैं लाइक
2 साल यहाँ पे रहा, एज ए TPR भी काम किया, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिला टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, वो भी डिजिटल प्रोफाइल में। फिर कॉलेज में हर तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, 6 महीना का इंटर्नशिप भी किया, TPR का भी पोस्ट संभाला, प्रोजेक्ट भी अभी अच्छे से हो रहा है। तो सब चीज़ों को देखते हुए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मीन्स लाइक क्या क्या सजेशन देना चाहोगे लाइक जूनियरों को कि ये करके आओ, या फिर कॉलेज में ये सब प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि उनका कॉलेज लाइफ एक बैलेंस चले, मीन्स उनके कॉलेज लाइफ में मस्ती भी हो, साथ ही साथ अच्छा प्लेसमेंट भी हो, सारा चीज़ का एक बैलेंस बना रहे। और भी अगर कोई चीज़ें मेंशन करना चाह रहे हो, लाइक अगर मीन्स आई हैव नॉट आस्क्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर दैट वन ऑल्सो। So basically, IIT BHU gives time for each and everything. I attended fests in our college. मैंने खूब सारे मस्ती की है कॉलेज में, और साथ में पढ़ाई भी करना पड़ेगा. So because MTech is like having a second chance in your life, because if something has not gone right in the BTech, then MTech is doing having something in your life as a second chance. So I believe in that. So you have to enjoy your life, and at the same time you should take your life seriously as well. And when it comes to me, I strongly believe that you should be scheduling time for each and everything in your life. Like for this thing, if you have time, this thing also should have time. Like if you are enjoying your work, and you should be in a position to enjoy the other activities as well. It should not be like you are enjoying the other activities like playing cricket and all those more, and if you are not enjoying your education or studying and all, then it is not going to help you that much. So I think it's काफ़ी easy है. And one more thing that I would like to say is, if you are having a bigger rank and you are thinking to give GATE again and all those things, just for the sake of betterment of the rank, I think that is not a very good idea. If you are already given so many attempts, I think it's high time for you to go and start joining a college and get some good knowledge in the college. And if you get a good company there, I think it's a very high time. And actually, one of the guys who got placement in Qualcomm is having from microwave background with a rank of around 2000, I guess, like 1900 around. So sometimes it doesn't actually matter. It's the effort that you're going to put in after coming into the college. If you really study hard and put in your efforts in a more dedicated way, then you're definitely going to see the results. That is going to be there. Definitely, even you will get better offer than get PSU or something like that. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जैसे गेट एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद जब एडमिशन लेते हो उसके बीच में आप प्रिपेयर करो, क्योंकि इंटर्नशिप आते ही लाइक शुरू हो जाता है, अच्छी कंपनी तभी आने शुरू हो जाती है. And actually TI comes to our college in August, like I think 1 or 2 months after you enter the college. I think July में admission होता है students को, and mostly in August TI will be visiting you. Definitely. And so you should be having at least some basic knowledge of everything that you have already studied in your GATE. It's not like you have to study more and new things, but at least you should have the basic understanding of already the subjects that you have already studied. If you are from electrical background, and if you want to prepare, if you are coming for the MTech ECE in IIT BHU, then you should be studying like digital circuits, analog circuits, and solid state devices for sure, so that you will have an equal opportunity along with the candidates, because you are going to have a lot of time before joining the college. I think you can manage that things as well. So you should at least revise all the topics that you have prepared for GATE before coming here. बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ों को पवन ने शेयर करने का कोशिश किया, एंड ही हैड डन हिज होमवर्क. सो पवन, इतना मीन्स अच्छी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन. प्लीज सब्सक्राइब टू हिम. उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और आप अपना भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लें. आप सभी अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ मेरे और पवन के लिंक्डइन आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं. आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.